Hey guys, good afternoon to all of you. क्या हाल चाल कैसे हो तुम लोग सब एकदम बढ़िया. Too good. Fantastic. Now guys, this is Rahul Malkan and guys, I'm exclusive educator with Unacademy. You can join a lot of my courses guys on Unacademy. Now I'm taking CA Inter Group 1 accounts, CA Inter Group 2 advanced accounts, CA Final FR, CA Final SFM. We have lot of guys comprehensive courses, the fast track courses. So guys, join me now and don't forget to use in my code RM10. And guys, we have given you one contact number also in case if you have any issues joining in my courses. So guys, for any further information, you can call up on the number 7825860 Are you exactly clear with that one? Guys, great, fantastic. अब ये लेक्चर किसके लिए हो रखा है, इसको थोड़ा साइड पे रखते हैं. ये लेक्चर हो रखा है गाइस फॉर द पॉकेट बुक रिविजन सीरीज फॉर AS10, that is property, plant and equipment. Are we exactly clear? PP. PP is one of a very important accounting standards. Group 1 के accounting standards में हमारे पास 8 standards if you remember, AS1, AS2, AS3, AS10, 11, 12, 13 and 16. So AS10, PP. This is on assets. So guys, this is my pocket book which I'm creating for you. Introduction, standard में क्या learn करने वाले, what is the scope of standard? Scope का मतलब applicable on what and not applicable on what. Definitions, important definitions. Recognition criteria, when should you recognize PP in your books of accounts. Measurement, initial measurement किस पे करना है, subsequent measurement किस पे करना है, अगर deferred payment है तो exchange of assets है तो frequency of revaluation increase decrease वगैरह वगैरह. Depreciation, guys, there are 3 methods of charging depreciation: derecognition, disclosure. चलिए एक एक चीज से आगे जाते हैं. Guys, first one is introduction. Now, what are we going to learn on this standard? Wonderful, thanks to my backhand team. सबके डायग्राम्स बना के रखे इसने. So guys, क्या करना है इस स्टैंडर्ड के अंदर? इस स्टैंडर्ड के अंदर हमें लर्न करना है कि when should we recognize PP. Guys, when should we, how should we measure PP? How should we charge depreciation on PP? And how should we derecognize PP? Are we exactly clear with that one? So guys, recognition, measurement, depreciation and derecognition. These are the principal issues governing property, plant and equipment. Too good. Scope. This standard is applicable to what and not applicable to what. This standard is applicable to all PP. Are we exactly clear? So anything that meets the definition of PP, AS10 डाल देना है वहाँ पे. Exceptions. When another standard requires or permits different accounting treatment. अगर कोई और standard requires some different accounting treatment or it permits some different accounting treatment तो वहाँ पे वो standard apply कर देना. Now for example, biological asset other than bearer plant ये standard apply नहीं होगा. Wasting assets including mineral rights, expenditure, exploration, extraction of mineral or regenerative resources वहाँ पे AS10 apply नहीं होगा. और अगर और कोई standard है जिस पे AS10 apply, something like lease, तो lease पे AS10 apply नहीं करेंगे, lease का standard apply कर देंगे, that is AS19. So first one applied on what? Anything that meets the definition of PP. But if there is any other standard which governs that PP, तो उस पे AS10 नहीं, relative standard. और अगर different treatment है तो अलग बात है. ठीक है? Too good. Done. Next one, definitions. चलो. Now this is very important for us to understand is the definitions. So what is PP? तुमको ज़्यादा दिखाएंगे बराबर स्क्रीन तो दिख रहा है ना? ठीक है. So guys, PP, property, plant and equipment. Property, plant and equipment are tangible assets. That is point number 1. So point number 1, you can say they're tangible assets. Guys, they are held for use in production or supply of goods and services or for rental or for administrative purpose. And last one is expected to be used for more than one period. So what is property, plant and equipment? Property, plant and equipment are tangible assets and are held for use in production or supply of goods and services or for rental or for administrative purpose and is expected to be used for more than one period. तीनों conditions satisfy होने चाहिए. They should be tangible, they should be used for held for production or supply of goods and services or rental or administration purpose and is expected to be used for more than one period. Calci, is it tangible? Yes. Is it used for production? नहीं. Supply of services, हाँ, मैं services provide कर रहा हूँ आपको. Is it going to be used for more than one period? Yes. The laptop that I'm using, is it tangible? Yes. Am I using it for providing service? Yes. Is it going to be used for more than one period? Yes. Pen,
Is it tangible? Yes. Is it used in production or supply of services? Yes. But is it expected to be used for more than one period? No. Sir, let's not apply PP on that. Simple. So what is PP? PP are tangible assets and held for production or supply of goods and services or for rental or for administration purpose and are expected to be used for more than one period. Biological assets. What are biological assets? Living plants and animals are biological assets. Are we exactly clear with that one? क्या बायोलॉजिकल प्लांट्स पे पीपी अप्लाई होता है? नहीं, एक्सेप्ट बेरर प्लांट्स. बेरर प्लांट्स पे पीपी अप्लाई होता है. सो लिविंग एनिमल्स AS10 रिवाइज डज नॉट अप्लाई इफ डेफिनेशन ऑफ पीपी इज नॉट मेट. तो इफ द डेफिनेशन ऑफ पीपी इज नॉट मेट देन लिविंग एनिमल्स पे पीपी अप्लाई नहीं करना है. प्लांट्स पे अप्लाई नहीं करना है इफ दे आर नॉट बेरर प्लांट्स. बेरर प्लांट्स पे पीपी अप्लाई होगा और लिविंग एनिमल्स जिस पे डेफिनेशन मीट होता है उस पे पीपी अप्लाई होगा. जगास टू गुड. बेरर प्लांट्स पे पीपी अप्लाई होगा, ठीक है ना. व्हाट आर बेरर प्लांट्स? इसलिए मैंने नेक्स्ट डेफिनेशन दिया आपको बेरर प्लांट का. गाइस, बेरर प्लांट इज अ लिविंग प्लांट. आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. Used for production or supply of agricultural produce. Is expected to bear produce for more than 12 months. तो एक प्लांट जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस देगा, एप्पल ट्री एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में एप्पल देगा, मैंगो ट्रीज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में मैंगोज देंगे. They are expected to bear produce for more than one period. Yes, they are expected to bear produce for more than one period. Fantastic. And guys, has a remote likelihood of being sold. मतलब वो प्लांट को काट के बेचने का बिजनेस नहीं होना चाहिए. वो बेरर प्लांट नहीं होता. बेरर प्लांट इज अ प्लांट जो हमें फ्रूट्स देगा और फ्रूट्स हम बेचेंगे. सो देन दैट प्लांट विल बी नोन एज बेरर प्लांट. पर अगर प्लांट ही काट के अगर हमें बेच देना है तो वो बेरर प्लांट नहीं हुआ, ठीक है. Has a remote likelihood of being sold as agricultural produce except for incidental scrap sale. So what is bearer plant? Bearer plant is a plant which is used for production or supply of agricultural produce, is expected to bear produce for more than 12 months and has remote likelihood of being sold as agricultural produce except for incidental scrap sale. Too good. Next one. What are bearer plants? Guys, there are plants, now nice, again the diagram. So guys, what are bearer plants? Plants cultivated to be harvested as agricultural produce. What are not bearer plants? So plants which are cultivated, harvested as agricultural produce. Teak wood plantation, उसी को काट के बेचना है lumber के लिए, they are not bearer plants. Annual crops like wheat and maize, they are also not bearer plant because उसको काट के बेच दिया जाएगा. Plants cultivated to produce agricultural produce and harvest and sell the agricultural produce. Trees which are cultivated both for fruits and lumber again are not the bearer plants. Are we exactly clear with that one? Too good. Bearer plant is only those plants which gives you एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फॉर मोर देन 12 मंथ्स और वो प्लांट को काट के नहीं बेचना है. टू गुड. नेक्स्ट, recognition. If somebody tells me what is recognition of PP, I tell them two simple words: fair and cost. When it is probable that future economic benefit of that asset will flow to the entity, and second one, when the costs are measured reliably. So how much are you paying for that asset is measured reliably, then we call it as recognition. It meets the recognition criteria. Are we clear? Jakas? Too good. What do you think about cost of day-to-day servicing? Nahin, cost of day-to-day servicing cannot be capitalized. It should be charged to P&L. Replacement part of plants and machinery. Guys, if the replacement part meets the criteria of recognition, then yes, otherwise no. Major inspection cost. Yes, if it meets the definition of PP, then major inspection costs are capitalized. Inspection cost will be capitalized as a separate asset altogether. ठीक है? Too good. Measurement. Guys, याद आ रहा है measurement. Initially, PP should be measured at cost and subsequently PP can be measured at cost or revised valuations. ठीक है? So that's a measurement. Initial recognition, cost model. After recognition, cost model or revaluation model. Jakas. Initial measurement, cost model. Cost model में क्या आना चाहिए? Includes, excludes, पूरी कहानी. Guys, cost of PP should include three things. First one is purchase price. वहाँ पे आ गया. Any other direct attributable cost, point number 2. And point number 3, very important guys, site restoration, decommissioning charges. Is this clear? Too good. So cost of PP includes 1 and 2 and 3. Cost of PP includes purchase price. It includes any directly attributable cost and decommissioning, restoration or similar liability. What a cost of PP should not include? Cost of PP should not include advertisement cost, publicity cost, staff training cost, opening up a new facility for the similar business, doing the business from the new location,
नो तो देखिए वहाँ पे cost of opening a new facility or business such as inauguration cost of introducing a new product or service, including cost of advertising promotion, cost of conducting business in new location or with new class of customer, including cost of staff training, etc., administration and other general expenses. Are we exactly clear with that? Too good. Chaliye, next one. Question number 1. Oh wow. Entity A has existing freehold property which it intends to knock down and redevelop. Property है, फैक्ट्री है, उसे काट मतलब हटा देना है, नया फैक्ट्री बनाना है, काटना क्या, वी हैव टू एक्चुअली नॉक इट डाउन एंड रीडेवलप, आई वुड रादर से. तो गाइज यहाँ से जो काम हो रहा था उसको टेम्पररीली शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरी जगह पे. दिस इज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस फ्रॉम न्यू लोकेशन और कॉस्ट ऑफ डूइंग प्रोडक्शन फ्रॉम न्यू लोकेशन कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड. पढ़ लो, मैं तो आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं करता हूँ. During development period, the company will move its production facility to another temporary site. Temporary site, the following are incremental costs. Setup cost of rupee 5 lakh to install machinery to new location, no, cannot be capitalized. Rent 15 lakh, no, cannot be capitalized. Removal cost of 3 lakh for transportation of machinery from old location to a temporary location cannot be capitalized. Installation charges machinery का एक जगह machinery work कर रहा है उसे capitalize कर सकते हैं. अब मशीनरी को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे लेके जा रहे तो फिर से वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकते गाइस. एब्सोल्युटली रॉन्ग, कांट डू दैट. गॉट इट? टू गुड. नेक्स्ट, डिफर्ड पेमेंट बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट. गाइस व्हाट इफ वी आर मेकिंग अ डिफर्ड पेमेंट? तो गाइस स्टैंडर्ड ने बहुत क्लियरली कहा है कि अगर आप डिफर्ड पेमेंट कर रहे हो तो मशीनरी को, पीपी को गाइस इनिशियल कैश प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे. मतलब आज अगर पूरा पेमेंट कर देंगे तो उस प्राइस पे रिकॉर्ड करना. अब फॉर एग्जांपल मैं टीवी खरीदने गया था, अब 40,000 का टीवी था, मैंने उसको बोला यार 40,000 नहीं है यार, वो हमारे पॉपुलर पैसा दे नहीं रहे यार, तो मुझे तो भाई 1 साल के बाद पेमेंट करनी पड़ेगी, आप बताओ कितना. तो बोलता राहुल 45,000 पे करना पड़ेगा. नाउ टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट पीपी. इज इट 40,000 और 45,000? क्या है ये कॉस्ट? 40,000 इनिशियल कैश प्राइस टुडे. 5,000 जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ना, दैट शुड गो टू P&L अकाउंट. टेल मी, आर यू क्लियर विद दैट? रीड इट. The purchase price of machinery is 40,000. The company did not have enough cash and therefore it agreed to pay 1 year later. However, they will have to pay 45,000. जो 5,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो फाइनेंस कॉस्ट है, वो बोरोइंग कॉस्ट है, वो P&L अकाउंट में जाना चाहिए. So machinery will be capitalized at 40,000. Chakas, too good. Exchange of assets, guys, याद है exchange of assets. An asset going out should be de-recognized at carrying amount. An asset coming in should be recognized at fair value of asset coming in or fair value of asset going out, whichever is more reliable. If the fair value is not available, then it should be debited at carrying amount of asset going out. जो asset जा रहा है वो value पे, जो value पे जा रहा है उस value पे asset आ रहा है उसे debit करेंगे. ठीक है. फर्स्ट वन, asset going out should be de-recognized at carrying amount. You can see at the flow chart. पेन किधर गया मेरा भाई? ये रहा, ये वाला कॉन्सेप्ट दिख रहा है ना? हाँ बराबर दिख रहा है. और asset coming in should be recognized at its fair value of asset coming in or fair value of asset going out, whichever is more reliable. If the fair value of asset coming in is and asset going out is not available, then carrying amount of asset going out. Note, if the fair value of both the asset coming in and going out is given and it is not specified as to which is more reliable, then we should write a note and assume that fair value of asset going out is more reliable. अगर दोनों का fair value दिया हुआ है, asset coming in का भी और asset going out, और ये नहीं बताया क्वेश्चन ने कि कौन सा fair value ज़्यादा reliable है, तो asset going out का fair value reliable ज़्यादा assume करना है, note लिखना है, आगे बढ़ना है. चलो, question number 3. DM purchases machinery in exchange of motor car B. क्या खरीद रहे हो मशीनरी? क्या जा रहा है? मोटर कार. मोटर कार B हैज अ बुक वैल्यू ऑफ 15 लाख. तो मोटर कार B का अगर बुक वैल्यू 15 लाख है तो 15 लाख 1,50,000 है तो उसे 1,50,000 पे क्रेडिट करेंगे. फेयर वैल्यू ऑफ कार गिवन अप इज 1,70,000. फेयर वैल्यू ऑफ मशीन इज 1,80,000. फेयर वैल्यू ऑफ मशीन इज मोर एविडेंटली नोन. मतलब फेयर वैल्यू ऑफ मशीन इज मोर एविडेंटली नोन, तो मशीनरी को कौन से अमाउंट से डेबिट करोगे? मशीनरी को 1,80,000 से डेबिट करेंगे, बट कार को 170 से नहीं 150 से क्रेडिट करेंगे. असेट गोइंग आउट शुड बी क्रेडिटेड एट कैरिंग अमाउंट. असेट कमिंग इन, मशीनरी आ रहा है, उसको किससे डेबिट करना है उसकी कहानी है. इट शुड बी डेबिटेड एट द फेयर वैल्यू ऑफ असेट कमिंग इन और गोइंग आउट, विच एवर इज मोर रिलायबल. दे सेड मशीनरी इज मोर रिलायबल, सो 180. डन. क्लासिक.
Subsequent measurement guys, either at cost model or revaluation model. ठीक है. फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन गाइस, सफिशिएंट रेगुलरिटी. स्टैंडर्ड ने नहीं कहा हर साल के एंड पे रिवैल्यू करो. सफिशिएंट रेगुलरिटी. सर व्हाट इज सफिशिएंट रेगुलरिटी? 3 महीने में करो, 3 साल में करो, 4 महीने में करो, 10 महीने में करो, वॉट एवर यू फील इज मोर रेगुलर. सफिशिएंट रेगुलरिटी के साथ करो ताकि मार्केट प्राइस ऑफ दैट असेट, द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट एंड हमारा बुक का कैरिंग अमाउंट में ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आ जाए. उसको थोड़ा पार में रखना है, उस हिसाब से आप उसे रिवैल्यू करते रहिए. So frequency. If PP experiences significant and volatile changes in fair valuation, annual revaluation. If the item of PP with only insignificant changes, then revalue that in 3 to 5 years. As simple as that. अच्छा, revaluation का increase decrease guys, again एक चार्ट, धमाकेदार चार्ट अपना. revaluation का increase decrease. revaluation upward कर रहे हो फर्स्ट टाइम, इंक्रीज कर रहे हो तो रिवैल्यूएशन रिजर्व, डिक्रीज कर रहे हो तो पीएनएल. सब्सिक्वेंट इंक्रीज कर रहे हो, पहले भी इंक्रीज किया था तो रिवैल्यूएशन रिजर्व, बट पहले डिक्रीज किया था तो पहले पीएनएल से निकालो और ज्यादा एक्सेस आएगा तो रिवैल्यूएशन रिजर्व. सर अगर असेट का वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो, पहले भी डिक्रीज किया था तो बेटा पीएनएल में डाल दो सीधा. और सर पहले अगर इंक्रीज किया तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकालो और एक्सेस आएगा तो पीएनएल में. चकास, टू गुड गाइज. नेक्स्ट वन, depreciation. How many methods of charging depreciation? 3 methods of charging depreciation. First one is SLM, second one is WDV, and third one is unit of production method. Review of depreciation method. Should we review the depreciation method? Yes, we should. If there are any changes in the method of depreciation, effect कैसे देना है? Effect देना है as per changes in accounting estimate, prospective as per AS5. It is not a change in policy. I will repeat once again. Change in method of depreciation is not a change in accounting policy. It is change in accounting estimate. Should be, given effect prospectively as per AS5. Question. First one. Entity A purchased an asset on 1st of Jan for 1 lakh. An asset had an estimated useful life of 10 years. 1 lakh का 10 years, 10,000 rupees का depreciation charge कर रहे हैं. On 1st Jan 2005, that is after 4 years, 2002, 3, 4, 5, 4 साल हो गए तो 1 लाख का asset, 4 साल का डेप्री 40,000, तो can I say carrying amount comes to 60,000. The directors review the estimated life and decided that asset will be used only for 4 years. तो गाइज अब 60,000 को डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो 15,000 आ जाएगा. सो डेप्री पर ईयर विल नाउ बी ओनली 15,000. नॉट ओनली 15,000, विल बी 15,000. पहले 10 था, अब 15. क्या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने की जरूरत है? नहीं, प्रोस्पेक्टिव. अब से डेप्री 15,000. Calculate the amount of depreciation for each year if the company charges depreciation on straight line basis. First year 10, second year 10, third year 10, fourth year 10, fifth year 15,000 का depreciation लगेगा. Derecognition. When should we derecognize an asset? Guys, we should derecognize the asset when the asset is sold, or when the asset is given on finance lease, or asset is donated also, or we should derecognize the asset when no future economic benefit is available from that asset. Are we clear with that one? Too good. Disclosures, बहुत common से disclosure रखे, general disclosure, additional disclosures, and disclosures on revaluation. ठीक है, फर्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ कि क्या करना है, और फर्स्ट पेज पे सारी कहानी आनी चाहिए. गाइज इंट्रोडक्शन, स्टैंडर्ड में क्या लर्न करना है? 1 2 3 4. गाइज रिकग्निशन लर्न करना है, मेजरमेंट लर्न करना है, डेप्री लर्न करना है, डी रिकग्निशन लर्न करना है. स्कोप, स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू ऑल आइटम्स विच मीट्स द डेफिनेशन ऑफ पीपी. इट इज नॉट एप्लीकेबल टू पीपी विच आर कवर्ड बाय एनी अदर स्टैंडर्ड, और विच अदर स्टैंडर्ड अलाउज द प्रिंसिपल, समथिंग लाइक बायोलॉजिकल एसेट पे नहीं, मिनरल राइट्स पे नहीं. Definition. What is PP? PP are tangible assets which are held for production or supply of goods and services, or for rental, or for administration, are used for more than one period. Next one. What are biological assets? Living plants or animals. PP not applicable, but bearer plants पे PP applicable. What are bearer plants? Bearer plants are plants which are used to produce, which are used for agricultural produce, are expected to bear produce for more than 1 year, and there are remote likelihood that the plant itself will be sold as agricultural produce. Guys, recognition. When will you recognize the PP? I will recognize the PP on Feb and cost, when future economic benefits are available to the entity and its cost is reliably measured. Guys, initial measurement cost. अगर deferred payment हो तो at cash down price today any extra payment goes to P&L account. एक्सचेंज ऑफ असेट हो तो जो असेट जा रहा है उसको कैरिंग अमाउंट पे क्रेडिट करना है, जो असेट आ रहा है वो फेयर वैल्यू ऑफ असेट कमिंग इन और गोइंग आउट, विच एवर इज मोर रिलायबल. सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करना है. उसमें एक चीज़ याद करा देता हूँ कि एक क्लास ऑफ असेट पे एक मेथड ही होना चाहिए. यू कैन फॉलो 2 डिफरेंट मेथड्स ऑन 2 डिफरेंट क्लास ऑफ असेट्स, ठीक है ना.
फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग पे 2 डिफरेंट क्लास ऑफ असेट फॉलो, 2 डिफरेंट क्लास ऑफ यू कैन फॉलो 2 डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिवैल्यूएशन। फैक्ट्री बिल्डिंग पे आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर सकते हो, ऑफिस बिल्डिंग पे रिवैल्यूएशन फॉलो कर सकते हो। अच्छा, रिवैल्यूएशन कभी करना है? सफिशिएंट रेगुलरिटी के साथ करना है। रिवैल्यूएशन का इंक्रीज, रिवैल्यूएशन रिजर्व डिक्रीज, प्रॉफिट एंड लॉस। इंक्रीज पहले भी इंक्रीज किया था, रिवैल्यूएशन रिजर्व इंक्रीज बट पहले डिक्रीज किया था तो पीएनएल से रिवर्स एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व। डिक्रीज पहले भी डिक्रीज किया था तो पीएनएल, डिक्रीज पहले इंक्रीज किया था तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकालो फिर पीएनएल। डेप्रिसिएशन, 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी एंड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। कैन आई चेंज द मेथड ऑफ डेप्री? यस, आई कैन चेंज द मेथड ऑफ डेप्री, but it is not a change in accounting policy, it is change in accounting estimate, and it should be dealt with prospectively as per AS5 changes in accounting estimate. De-recognition, when the asset is sold, asset exchange में दे दिया, asset donate कर दिया, और second thing, when no future economic benefits available from the entity. Tell me, chakas. Love you guys. Take care. Bye bye.